गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 5th रीजनिंग का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रैंकिंग एंड कंपैरिजन। ओके, तो इसमें एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द पोजीशन, ओके, और वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी पर्सन, स्टूडेंट्स, people, number of students. Okay, so we have to analyze the information and then we have to find the required answer. Okay, now starting, let us start with the question number first. Rohan ranks 18 in a class of 49 students. Okay, so total number of students are 49 and Rohan has the position 18. What is his rank from the last? If we check its position from the last, so what we have to do, from the left side or from the starting, Rohan is getting 18. Okay, in a class of 49 students, total students are 49. So just subtract both the number 49 minus 18. So we are getting here 1 and 3, 31. Okay, but when we subtract this 18 now, to this Rohan's position also get eliminated. So we are getting 31. So what we are getting, we have to add 1 again to get the position of Rohan. जब हमने इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो रोहन की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो एलिमिनेट हो गई। तो जब हमें 31 मिला उसमें रोहन काउंटेड नहीं है, तो रोहन को काउंट करने के लिए अगेन वी हैव टू ऐड 1, सो वी आर गेटिंग 32, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये 1 ऐड करना बहुत जरूरी है। जब हम डायरेक्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली उसमें वो पर्सन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो टू गेट दैट पोजीशन आई ऐड 1 हियर, so 32 means option D is correct. Okay, now coming to the question number second. Vishal is ranked 14 in a class of 43 students from the top. So here they are asking from the top and the bottom. Okay, so again the question is of same kind, है ना, उसमें हमें लेफ्ट राइट था, इसमें टॉप बॉटम है। तो अगेन 43 minus 14, it will be 9 and 3 minus 1 is 2, 29. बट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे विशाल की पोजीशन भी एलिमिनेट हो जाती है, तो 29 plus 1. Okay, I am making plus 1 here, so 30 means option A is correct. Okay, now the question number 3. Ananya is ranked 7 in a class of 49 students from the top. Again they are asking from the bottom, so the pattern will be same. 49 minus 7, we are getting 42 plus 1 means 43 is correct. Okay, now coming to the next question number 4. Rajan ranks 16 from the top, okay, and 49 from the bottom. Okay, so total number they are asking. Okay, question similar kind of, but here total number of students they are asking. So what we have to do, add 16 plus 49. We are getting 49 plus 6, 15, 5, 1 carry, 4, 5 and 6, 65. बट जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो यू कैन सी कि 16 पोजीशन राजन की ही थी फ्रॉम द टॉप और 49 भी राजन की ही थी फ्रॉम द बॉटम। तो इधर राजन 2 बार काउंट हो गया है, तो हम इसमें -1 करते हैं टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली इट विल बी 64. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Joseph ranked 9th from the top and 38 from the bottom. Again, the total number of students they are asking. So our numbers are 9 and 38. 9 and 8 is 17, 47. But I told you कि इस तरह से ऐड करने पे हमने जोसेफ को we counted it 2 times. So again -1, correct answer will be 46. Okay, now coming to the question number 6. It is, if Tina finds that she is 10th from the left end. Okay, 10th position Tina. Okay, so we must know कि right side जिस end से हम लिखते हैं वो हमारी right side होती है. Okay, opposite hand हमारा left side represent करता है, तो this position is the left one. Okay, and Tina has the position 10th from the left and in the line of a girl and 6th from the right hand. Again, we are getting the 2 position for the Tina. How many girls should be added to the line such that there are 28 girls in a line? Okay, तो let us find कि अभी करंट सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए।
तो 10 प्लस 6 इज 16. तो आई टोल्ड यू कि टीना 2 बार काउंट हो रही है, -1 मीन्स 15. करंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 15 and we want 28 total. Okay, so how many more girls should be added? So 28 total minus 15. 15 is the total number of previous students, means the total number of students in the first case. Okay, so it is 15. So we are subtracting here. 5 and 3 is 8. 13 means our answer must be option D, 13. तो 13 गर्ल्स हमें और ऐड करनी पड़ेगी ताकि इन टोटल 28 गर्ल्स हो जाए. 15 है प्रीवियस कंडीशन में, एंड व्हेन वी ऐड 13 मोर द टोटल विल बी 28. ओके, होपफुली आपको समझ आ रहा है. लेट अस कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. If Ramesh finds that he is 12th from the right, okay, now this is our right side, this is our left side, and Ramesh finds that he is 12th. Okay, so 12th position from here is of Ramesh, and fourth from the left. Again, the similar kind of question it is. Fourth from the left, the position of Ramesh. So similar kind of question it is. They want 28 total. So how many more boys should be added? In sixth question, it is girls. In seventh question, it is a boy. Otherwise, the condition is perfectly same. Okay. So 12 plus 4 is 16. I told you कि we add Ramesh 2 times. So it must be 15. Okay. So 15 is the number of boys in first case. We have to make it 28. So 28 minus 15 is what? 5 and 3 is 8, 2, 13. So option B is correct. So you can see कि ये क्वेश्चन सिमिलर काइंड है, बट हमें थोड़ा इसमें देख के चलना है कि वो टोटल पूछ रहे हैं, ओके, या एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पूछ रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. If Rajat find that he is 10th from the left end, again this is the left end, this is the right end. Okay, Rajat find that he is 10th from the left. Okay, so this is the position of Rajat from the left end in the line of boys, and sixth from the right end. Again, the position of Rajat from the right side is 6. Again, it's a similar kind of question. So, how many boys should be added to the line? The total number of boys will be 35. Okay, again, 10 plus 6 is 16. Okay, Rajat is counted 2 times, so make it 15. To make 15 35, you can what you can do, 15 plus 15 is 30. Okay, but we want 35, so make it 20. We have to do the subtraction. Okay, or you can use the pattern कि 15 plus 15 30 होता है. To make it 35, it must be 15 plus 20. So 20 is the correct answer. Or you can directly do the subtraction also. 5 minus 5 is 0, 3 minus 1 is 2, 20 means option C is correct. Okay, now coming to the question number 9. Ruby is 8 ranks ahead of Jessica, who ranks 26th in a class of 42 students. Okay, now the total number of students are given 42. Ruby is 8 rank ahead of Jessica. Okay, let us consider कि ये Jessica की position है which is 26. तो Ruby 8 rank आगे है, तो मैं Ruby को plus 8 करके इधर ले लेती हूँ. तो Ruby की position क्या होगी? Let us add 8 in the 26. So 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 is the position of Ruby. Okay, from the left hand, if you can say, or from the starting position, you can say it is 34. So they're asking कि what is Ruby's rank from the last. तो last से Ruby की rank find out करने के लिए do 42 minus 34. We are getting 8 and 4 12 0 8. बट जब हमने इसमें से 34 सब्ट्रैक्ट किया, रूबी भी एलिमिनेट हो गई. रूबी की रैंक ही फाइंड करनी थी, तो एलिमिनेट हो गई है. तो अगेन वी हैव टू डू +1 9. ओके, तो ये उस तरह के क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसी टाइप का है. बट इसमें क्या है कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करके दे दिया कि वो जेसिका से 8 पोजीशन आगे खड़ी है. तो हमें इस चीज को नोटिस करना है कि जेसिका 26 पोजीशन पे है, टोटल 42 स्टूडेंट है, रूबी 8 रैंक आगे खड़ी है, मींस वो 34th पोजीशन पे खड़ी है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड इट. ओके, होप इट इज क्लियर टू यू. Now coming to the question number 10. Meena is ranked 12th from the top.
Okay, this is Meena, ranked 12th from the top. Meena ranked 12th from the top, and Ravina is ranked 15th from the bottom. Okay, let us make the position of the Ravina here 15th from the bottom. Okay, in a class of 35 students, means these are the total number of students 35. How many students are there between Meena and Ravina? मीना और रवीना के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? टोटल 35 है. ओके, सो अगर हम मीना की पोजीशन टॉप से देखते हैं तो 12 आ रही है. रवीना की भी अगर हम टॉप से फाइंड करना चाहेंगे तो इट मस्ट बी 35 minus 15 plus 1 we have to do. So here we are getting 5 minus 5 is 0, 20. 20 plus 1 means 21. तो टॉप से रवीना की पोजीशन हो गई 21. ओके, और मीना की पोजीशन हो गई 12. मीन्स इनके बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली है 21 minus 12. 21 minus 12 is what? It's 9. Okay, or how many students are there between Meena and Ravina? So you can see कि हमें मीना की पोजीशन यहाँ पे टॉप से 12th गिवन थी. मीना की पोजीशन, रवीना की पोजीशन हमने फाइंड आउट करी. ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 21 फ्रॉम द टॉप. ओके, अगर हम टॉप से देखते हैं तो मीना की पोजीशन 12 है, रवीना की पोजीशन 21 है. तो इन बिटवीन कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? इट्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. 20 means 8 students are coming. Just count 13 from 13 to 20. So 8 students are coming. So the correct answer will be option A, 8. Okay. Let us start the question number 21 of this reasoning series. Okay, if you count 21 letters in English alphabet from the end, okay, and 20 letters from the beginning, which letter is exactly appears in the middle of the sequence thus formed? Okay, तो English alphabets का question है, तो I will suggest you कि let us write the complete alphabet first, A to Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, then Y and Z. Okay, if you count 21 letters in the English alphabet from the end, so 21 from the, then Y and Z. Okay, if you count 21 letters in the English alphabet from the end, so 21 from the end, or you know कि total alphabets are 26, so 21 will be 26, 25, 24, 23, 22, 21. This is the 21 alphabet from the end. End means from the right side. If we count, F will come the 21, and 20 letter from the beginning. 20 letter from the beginning means again you have to skip the 6 letters from the end. 1 2 3 4 5 6. I am skipping these 6, so I am getting T as the 20. Okay, means this 20 letters they want from the counting from the left side. Okay, and this 21 they want the number from the right side, counting from the right side. Okay, this is 20, this is 21. 21 from the right side if we start counting, and 20 if we start the counting from the left side. Okay, so now the question become easy. Which letter will exactly appears in the middle of the sequence? Middle means first count कि how many letters are there in between. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 means the seventh letter will be the middle one. 1 2 3 4 5 6. I am skipping these 6. This seventh one will be our answer, means option D, M. ओके, 6 हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं तो डेफिनेटली 6 यहाँ पे रह जाएंगे ऑन द राइट साइड. सो मिडल लेटर एम हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, अगेन द सीरीज क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 21. इन द गिवन लेटर सीरीज विच लेटर इज फोर्थ? ओके, फोर्थ वी हैव टू फाइंड आउट टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पी एंड एस. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप एंड से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की एंड से स्टार्ट करेंगे. विच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पी एंड एस. तो पी एंड एस के मिडवे में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 लेटर्स आर देयर, है ना.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we have to take the sixth letter, है ना, skipping fifth from here, five from here and five from here. Sixth letter will be the middle one. 1 2 3 4 5 6, which is O. Okay, O is the midway letter. Okay, and we have to find which letter is fourth to the left. This is the right side. जिस हैंड से हम लिखते हैं वो राइट साइड होती है, अपोजिट जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड होता है. तो जो मिडवे लेटर आया बिटवीन पी एंड एस वो ओ आया. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ टू द लेफ्ट. दिस इज द लेफ्ट साइड. ओके, फोर्थ 1 2 3 4 मीन्स एच. एच इज द फोर्थ letter to the left of O. So option D is correct. Okay, now coming to the question number 23. Again it is the English alphabet question, series question. How many letters are there between 8th letter from the left and 7th letter from the right in English alphabet? Okay, so we have a complete series which we have written for the question number 21. Question number 21 के लिए जो series हमने लिखी थी उसी को use करेंगे. हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट. आई टोल्ड यू कि जिस हैंड से हम लिखते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है और अपोजिट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड होता है. एंड दे आर सेइंग कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8th लेटर इज दिस एच. एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट, अगर हम राइट से 7th लेटर ले तो 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 means the T. Okay, and which is how many letters. Now they are asking the number of letters. वो कौन सा लेटर नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ लेटर्स पूछ रहे हैं. कितने लेटर्स इन बिटवीन आ रहे हैं. 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट जो कि एच है, एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि एस है ना. 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एच है. 7th लेटर फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7th. ओके, 7th लेटर इज टी. ओके, नॉट द एस, इट इज टी. let us make it more clear कि हमें लेटर्स किसके बीच में फाइंड करने हैं. 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 means H. I am making a triangle here. And the letter from the 7th letter from the right 1 2 3 4 5 6 7. Again I am making a triangle here. तो कितने लेटर्स इनके बीच में हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 letters are in between. 11 alphabets are in between. So option B is correct. Okay, hopefully these questions are clear to you. Moving to the next question, which is question number 24. ओके, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है. हमारा चैप्टर है रैंकिंग एंड कंपैरिजन. तो 24th क्वेश्चन जो है कंपैरिजन का है. कंपैरिजन में व्हाट वी हैव टू डू कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है या जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसको एक इक्वेशन बना के हम लोग उसको कंपेयर करते हैं. इक्वेशन बना के इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू कंपेयर. ओके, लेट अस सी हाउ. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. Okay, among A, B, C, D, A, B, C and D, B is heavier than A. B is heavier than A. So I am making this equation कि B is heavier than A. तो greater sign towards the B. And C, okay, so B is heavier than C also. Okay, C is not as heavy as A. C is not as heavy as A means A is heavy than C. Okay, D is heavier than B. D is heavier than B. Now we have the 4 equations and we have the 4 person A, B, C, D. So let us make a one equation out of these 4 equation. How we can do? B is greater than A. To find the heaviest, we have to convert these 4 equation in one single equation. Okay, B is greater than A. B is greater than C also. Okay, B is greater than C also. And A is greater than C. So we have to write it like this कि A is greater than C. Now you can see कि B is also greater than C. D is greater than B. So D is the first one in the heaviest position. D is greater than B.
B is greater than A, B is greater than C also, A is greater than C. So you can see कि D is the heaviest one, means option C is correct. तो जो भी कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा इस तरह के डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे, उनसे एक सिंगल इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 25. द वॉच, फॉर द वॉच आई एम. Now let us start with the question number 25. The watch is more expensive than shirt. For the watch I am using symbol W, and for the shirt I am using symbol SH. The watch is expensive, so greater sign is towards the watch. Then shirt, so SH. And watch is expensive than tie also, so TI for tie. This equation. The tie is less expensive than shirt. Tie is less expensive than shirt, so you can say that shirt is more expensive than tie. The tie is less expensive than shirt but more expensive than shoes. So tie is more expensive than shoes. So for the shoes I am using S. For the shirt I am using SHI. Okay, SHI is for the shirt. SHI. And S is for the shoes. Okay, so tie is more expensive than shoes. Which of the following is least expensive? So again we have to make a single equation out of this four equation. Watch is greater or you can say expensive than shirt. Okay, shirt is greater than tie or you can say expensive than tie. Watch is expensive than shirt. Watch is expensive than tie also. Shirt is expensive than tie, this equation, and tie is expensive than shoes. So you can see the least expensive item among all is shoes, option B. Okay, hopefully you are finding these questions easy. Now question number 26. Tom's school is smaller than Jerry. Okay, so we will make the Jerry school bigger than the Tom school T. Okay, Tom's school is smaller than Jerry. Okay, but larger than Kim. Tom's school is larger than Kim. Whose school is smallest? So you can see the Kim's school is smallest. Very easy equation, single equation. We got our answer. Now, question number 27. Question number 27 is the mill city. Okay, I'm using M for the mill. MI for the mill is shorter than the mall city. So you can say the mall, MA. Mall city is greater than mill city. The ramp city is larger than gold city. Ramp city means R is greater than gold. Ramp city is larger than gold city but smaller than mole city. So we can say कि ramp is smaller than mole. This is our equation कि mole greater than ramp greater than gold. Okay, which city is largest? Okay, can we make a single equation out of this? Let us check. Mole, ramp and the gold, and they are asking for the largest. So you can see that the mole is greater than the mill city also, and mole is greater than the ramp also, and mole is greater than the gold also. So in all, mole is the greatest one. So D option is correct. Okay, now question number 28. The plum cake, PL, the chocolate cake, CH. The plum cake, I am using PL, is larger than the chocolate cake, I am using CH. The strawberry cake is larger than plum cake, the strawberry, ST. The strawberry cake is larger than the plum cake. We can write like this. The vanilla cake is larger than chocolate cake, vanilla larger than chocolate. So we can see that the chocolate is the smallest till now, but smaller than the plum cake. The vanilla cake is larger than the chocolate cake, but smaller than the plum cake. The vanilla is smaller than the plum, and plum is smaller than strawberry, or you can say strawberry is larger than plum. So this is our final equation. You can see. Let us compare which cake is the smallest among smallest is the chocolate cake, means option D is correct. So you can see कि आउट ऑफ डिफरेंट इक्वेशन अगर हम एक सिंगल इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है. तो उसी पे फोकस करना है, हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, एंड डेफिनेटली देन यू विल गॉट योर रिजल्ट. Among 5 children, question number 29. Among 5 children, so there are 5 children, P, Q, R, S, T, each having a different height. Okay, P is taller than only S. Okay, P जो है सिर्फ S से बड़ा है, बाकी सबसे वो छोटा रहेगा.
P is taller than only S. And R is shorter than only T. R is shorter than only T. बाकी सबसे R बड़ा रहेगा. ठीक है. ओके. हु अमंग देम इज थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ हाइट. तो देखिए टोटल 5 चिल्ड्रन है, P Q R S T. P जो है सिर्फ S से बड़ा है, तो हम इसको पीछे डाल सकते हैं कि P जो है सिर्फ S से बड़ा है और किसी से बड़ा वो नहीं है, बाकी सबसे वो छोटा रहेगा. और R जो है सिर्फ T से छोटा है, बाकी सबसे वो बड़ा रहेगा. तो P Q इज मिसिंग ओनली, तो Q इनके बीच में आएगा. तो यू कैन सी कि Q की पोजीशन ही थर्ड पोजीशन बन रही है. थर्ड मेज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, क्योंकि R छोटा है, सिर्फ T से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है. P ग्रेटर है, सिर्फ S से ग्रेटर है और किसी से ग्रेटर नहीं है. तो Q जो है वो इन बिटवीन है R एंड P के. तो Q इज एट द थर्ड पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ हाइट. So option B is correct. Now coming to the last question of this chapter, which is question number 30. P is taller than Q. Okay, so we have to write like this: P is taller than Q. R is shorter than P. Okay, R is shorter than P. So we can write कि P is greater than R also. R is shorter than P हो गया. S is taller than T. Okay, S is taller than T, but shorter than Q. S is shorter than Q. We know this equation also. Okay, and P is greater than R also. Okay, let us start again. If P is taller than Q, our first equation, R is shorter than P, our second equation, S is taller than T, this one, but shorter than Q. S is shorter than Q means this equation. और जब हम इसको अरेंज करते हैं, we are getting this. Okay, who among them is tallest? So we can easily see कि हमारी लेफ्ट साइड पे tallest position पे P is coming, means option A is correct. So all the questions of this ranking and comparison chapter has been done. If still there is any doubt, you can ask. I will solve that doubt and make you clear the complete chapter. Okay, so see you soon. Take care. Bye bye.